All right, ladies and gentlemen, मैं हूं सिद्धार्थ खन्ना। यस यस यस, ये आप जो देख रहे हैं, ये मेरा केनेथ कोल न्यूयॉर्क का मास्क है, which is stylish, which is very easy to breathe, which is makes it so comfortable. पता भी नहीं लगता है मास्क है चेहरे पर, but actually hair. And I got this for myself, the Kenneth Cole New York mask. We're in this together. I love the tagline. अरे हम आप हम सब एक साथ हैं इसमें दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है। My Kenneth Cole, a New York mask, बड़ा हैंडसम लगता हूं इसको पहनकर। Anyways दोस्तों, thank you so much. Sorry थोड़ा डिले हो गया था, but I was talking to the police commissioner, Mr. Bhaskar Rao from the Bengaluru City Police Force. They have set an example all across the country. मैं भी Indian Police, ये हमारे campaign का नाम है, to let you all know the kind of work our heroes are during these times. आप उनको support करिए क्योंकि वो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं. The Police Force of India. We're going to be talking to a lot of them across the board. Mostly next Thursday हमारा next episode होगा मैं भी Indian Police Force का, Mr. Bhaskar Rao and team. That video is going to come on my YouTube and Insta post also very, very soon. In the meanwhile, I am getting Shirley Sethia. Sorry, 10 minute delay हो गया. Shirley, what's up? Hi, what's up? What's up? I was watching your live earlier, and I just messaged you because I just saw you talk so much, and I was like, it's okay, take your time, pani pee lo aap. But it's so nice to see you speak to the real heroes of this time. I really enjoyed it. I was watching it actually. I watched, I think, the last 20 minutes or so. Yeah, we were having a little bit of an internet issue, but we got through finally. But I want to tell you that I'm sorry to keep you waiting, but we have a lot of respect for you as well. Please don't apologize. It's cool. I'm chilling. I'm having my chai, so I'm quite. क्या बात है? Cheers, 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 cheers. But I really felt so good talking to Mr. Bhaskar Rao. He's the Bengaluru City Police Commissioner, and I'm doing this whole thing where I'm going to be talking. He was so lively. Even the lady he just introduced us with, Isha ma'am. Yes. So both of them so excited. Like, मतलब उनके face पे से इतना liveliness आ रहा था. It was nice to see them. And can you imagine the amount of stress they must be going through minute to minute in life? Exactly. But they didn't none of that was like they don't make you feel that, है ना? मतलब वो ऐसे express नहीं कर रहे थे कि इतना stress है and all. But in fact, one of my mom's friends in Daman, he's also in the police force, and I think when the lockdown had started, so there was this one day when my mom had called him, so उन्होंने सामने से video call किया दिखाने के लिए that that all of us are working and this is where we are, and all of them were out working, matlab 12-14 hours they're working every single day, and it's very stressful, and for people like us, we're lucky enough that hum ghar pe hain, and we're safe, and we have people, the real heroes to look after us. So I was totally on top of the world, absolutely. So I'm going to message you next time as well when I'm talking to the next police commissioner. I'd love you to watch it, and thank you for realizing all the work they do. So listen, man, young lady, movie star now. I was told, मुझे बताया गया था, तो हिंदी में बात करते हैं क्योंकि ज्यादा लोग सुनते हैं हम लोग को तब. तो अभिमन्यु के साथ आप निकम्मा कर रही थी, शिल्पा शेट्टी थी, फिल्म रिलीज होने वाली थी, और लॉकडाउन हो गया. What to do? पर दिल से बताओ, जब तुम्हारा YouTube करियर शुरू हुआ, क्या एक दिन शर्ली सेठिया ने सोचा कि एक दिन भारत की आवाम उनको बड़े पर्दे पर देखने वाली है? ये पहले से ही था अंदर की फीलिंग? See,
करना तो मुझे हमेशा से वही था, बट मुझे पता नहीं था कि होगा या नहीं, बिकॉज पहले इवन बिफोर आई स्टार्टेड यूट्यूब, मैं मतलब मेरा घर इज बैक होम न्यूजीलैंड में, तो आई नेवर थॉट दैट आई वुड कम back to India and live in a new city. यहाँ पे मतलब मैं किसी को जानती नहीं थी from Bombay or from the industry. My parents are completely different. मतलब my dad's an entrepreneur. My mom's a homemaker. She's also done interior design का course, so she's into that. And मेरे extended family में you'll find lawyers or you'll find doctors, but no one from this field, so I'm kind of like the odd one out. But it's good. So मैंने कभी सोचा नहीं था that it'll work out. I always wanted कि मैं ये करूँ, because मुझे पसंद था, मैं बचपन से डांसिंग भी करती थी and all that. So when YouTube happened, I kind of went with the flow कि ठीक है, maybe this is maybe this is my calling and people are really appreciating my videos, and I started then फिर उस पे focus करना मैंने शुरू किया. But yeah, somehow I landed up here, and I did Muska, and Nikamma is also happening. So yeah, क्या बात है. ये रहा मेरा विक्ट्री वेव. अपने लिए करो. Come on, let's do this. Come on. कैसे करते हैं? विक्ट्री वेव. This is my. ऐसे करो. अरे ऐसे. आहा. स्टाइल के साथ ऐसे. अच्छा मुझे बताओ, ये पैजामा पॉप स्टार का खिताब बड़ा अनयूजुअल खिताब है यार जो तुमको मिला, पैजामा पॉप स्टार. या तो एक्चुअली इसकी स्टोरी ऐसी है कि मेरा जो पहला वीडियो वायरल हुआ था यूट्यूब पे, which was तुम ही हो, दिस वाज इन 2013. तो मैं अपने घर पे बैठी हुई थी ऑन द फ्लोर, और मैंने रात को शूट किया था. सो आई वाज वेयरिंग पजामास, एंड या वो वेबकैम से शूट किया था वो वीडियो. देन सॉर्ट ऑफ गॉट लव्ड वेरी मच, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दैट टाइटल ऑफ पजामा पॉप स्टार, व्हिच आई लाइक. मुझे पजामास बहुत पसंद है. सो I'm all for home clothes and home clothes all the time. So मुझे तो पसंद है. क्या बात है. माने क्या लोग आपको पीपी बुलाते हैं? पीपी, पैजामा पॉप स्टार पीपी? नहीं, but actually that's so funny. My manager, he is called PP. So quite an interesting connect. I never thought about that before. तो आज से मैं तुमको पीपी बुलाऊंगा. शर्ली सेठिया नहीं, व्हाट्सअप पीपी. डन. पीपी भी चलेगा. मुझे एसएस भी बुलाते हैं. साबिर सर ऑलवेज कॉल्स मी एसएस. मैं उनके पास जाती हूँ तो लाइक एसएस ओनली, ही विल से शर्ली सेठिया, सो उनका शॉर्ट करके एसएस. व्हाट्सएप एसएस. हाय एसएस. पूरी दुनिया तुमको एसएस बुलाएगी. मैं स्पेशल फील करना चाहता हूँ. मैं तुमको पीपी बुलाऊंगा, पैजामा पॉप स्टार. यार मुझे जेन्युइनली बोलो, 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं आपके यूट्यूब पर. कहीं आपको स्ट्रेस रहता है यार नंबर गेम का? रोज रात को आप उठ के देखती है कितने सब्सक्राइबर्स हैं, सोते वक्त देखती है, उठते वक्त देखती है, रहता है ये रेस की यार और सब्सक्राइबर बेस बढ़ना पड़ता है? प्रेशर हैंडल करती है कि नहीं? ये प्रेशर नहीं, एक्चुअली मैंने कभी इसको ऐसे इन द सेंस एज प्रेशर देखा नहीं, बिकॉज आई फील अगर मैं उस तरह से सोचने लगी तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, एंड देन आई ओनली वोंट बी एबल टू टेक इट. सो I take things as they come, and I do things as and when I can do them. Like last year, I could not focus a lot on my channel or a lot on my music videos because I was shooting non-stop for Muska and Nikamma both. तो थोड़ा difficult हो जाता है simultaneously, to do that as well. But then I was still creating like some dance videos because मैं dancing की training भी ले रही थी for the film and all of that. So that I tried to keep doing, and now जब अब मुझे time मिला है lockdown के through, so I'm working on videos and I'm doing that. So as and when I can do whatever, I'm trying to do that. So मैं उस चीज का pressure
नहीं लेती और मुझे वो लेना भी नहीं है, because then it will be too much to handle. अच्छा बता, आप बहुत बहुत यंग है, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? 20? आपको क्या? नहीं आई विश आप 20 साल से ज्यादा नहीं दिखते। हाँ ना, एक्चुअली एवरीवन टेल्स मी दैट। हाँ 28 29 की होंगी मैक्स। नो 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 नो, अरे बता ही दो ना। that's gone ऊपर थोड़ा तो उम्र कितनी आपकी? 24 25? या बट आई टेल यू, वैसे अभी मेरा बर्थडे आ रहा है 2 जुलाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे यार। मेरे लिए तो कुछ भी मौका चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए। पर मुझे बताओ, इतना सारा फेम पाने के बाद आप अपने माइंड को कंट्रोल में कैसे रखती हैं? आई थिंक मेरी जो फैमिली है एंड मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो एक्चुअली they've been there with, like, my family's so been there with me all my life, but my close friends have been there, you know, since like forever. So I think they keep me grounded more than anything else, and also my fans, because every time I speak with them, or every time and they've been there since like the very 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 beginning, and the way that they support me, you know, मेरे shows पर आते हैं वो, मेरे gigs पर आते हैं अभी, they all of them are watching the live stream. I think all of that love keeps me grounded, and I know that I want to keep doing more better work and like, you know, perfect myself and whatever work that I'm doing to kind of give that love back. So I don't really see it as fame or anything, and I feel like मेरा lifestyle बहुत normal है। Like न्यूजीलैंड में जब हम रहते थे तो घर का सारा काम खुद ही करते थे, like dishes and everything. So you know, we've grown up doing all of that. So I've never really like let go of that aspect of my life. So yeah, I feel like all of that has kept me grounded for sure. But my family and close friends, absolutely. डिजिटल सेंसेशन तो आप हैं ही, बट इंडिया में आकर मूवीज पाना वो बहुत बड़ी बात होती है। जेन्युइनली बोलो, वो मूवी पाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े? डिड यू हैव टू स्ट्रगल? डिड यू हैव टू कॉल पीपल एंड पीपल आर सेइंग अरे शर्ली तुम यूट्यूब सेंसेशन हो, ये हो, पर यू नो व्हाट, मूवी स्टार बनने के लिए बहुत चीजें करना पड़ता है, 50 ऑडिशंस देने पड़ते हैं। स्ट्रगल हुआ था कि नहीं? हाँ, तो ऑडिशंस तो मैंने बहुत दिए हैं, एंड मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग से लगता था कि मुझे एक्टिंग करनी है, बट आई वाजंट श्योर, एंड आई थिंक आई पर्सनली वाजंट, खुद के बारे में एक अश्योरिटी होती है ना कि नहीं अब यही करना है। जैसे जब मैं इंडिया शिफ्ट हुई थी फॉर म्यूजिक एंड टू डू मोर ओरिजिनल सॉन्ग्स, तो मेरे माइंड में वो था कि नहीं अब तो मैं यही करूंगी और मैं करूंगी। बट वो जो श्योरिटी होती है, दैट कॉन्फिडेंस when you really want to do something, I was a little confused, also because I wasn't sure if that's something that I like completely. तो मैं जब अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स शूट करने मैंने शुरू किए, तो I did a song called कोई भी नहीं, and the director of that song, Robbie sir, he told me, he's like, Shirley, आपके इतने अच्छे एक्सप्रेशन है, आप एक्टिंग क्यों नहीं सोचती हो? तो मुझे लगा उस टाइम पे मैं उनको बोलूँ कि ओह आपने मेरी दिल की बात छीन ली, मुझे एक्चुअली ये करना है, बट यू नो I'm not sure and I don't know what to do, and all of that. But meanwhile I was still giving auditions, and that was all going on. So then in 2018, while everything was happening, and I said, listen, you know, फिर मैंने अपने आप को बोला कि नहीं अभी मैं ये कर सकती हूँ, बाद में then if I want to do it, I don't know फिर मुझे वो मौका मिलेगा या नहीं।
Oh, hi Sachin. So Sachin Jagar, Sachin is watching. He just said What's hi. up, I thought Sachin I'll say Baba? hello. Naughty boy, naughty boy. चुप चुप के हमारा लाइव देख रहे हैं. बदमाश मेरे भाई, बट क्या स्वीट बंदा है यार, मेरा बहुत अच्छा He's दोस्त है वो. very sweet, very very. In fact, they gave me my debut song. You know, Disco Disco. Yeah. We'll come back to that. But yeah, so I was saying, so in 2018, I decided that मैं अभी ये कर सकती हूँ अगर मुझे करना है तो. So then I went to New York to study acting. तो मैंने कुछ महीने अपने यहाँ काम वाम सब मैंने बोला थोड़े टाइम बंद करो, मैं जाके पढ़ूंगी. अगर मुझे वो पसंद आया and if I'm really like into it and everything, तो then I'll just go for it. तो वहाँ बहुत मजा आया मुझे. In fact, I missed those days. It was so much fun to go back, you know, as a student, because I've studied in Auckland as well. But this was different. This was something that I enjoyed even more. My lecturers were super supportive and they said कि अगर आपको ये field में कुछ करना है तो you know you're absolutely on the right path. फिर जब मैं इंडिया आई तो फिर I started giving a lot more auditions. I then decided कि नहीं अब मुझे ये करना ही है. So but yeah, auditions and all of that are a part and parcel of this journey. In fact, it's still there. You meet people, you give auditions, and it's not always like कि अच्छा ये मुझे इस बार क्यों नहीं हुआ. Sometimes it's you don't connect with the character. Maybe you know you're not right for the character. Like I remember जब मैं साबिर सर से मिली थी तो मैंने उनके साथ and उनकी AD टीम के साथ I did proper workshops with them. We had a scene or two and he said, listen, मैं ये देखूंगा but मैं आपको करते हुए नहीं देखूंगा. You do it. हम आपको record करेंगे and I'll watch it on the screen to see you know if you fit my character, which is the right, like I think it's the right way to go about it. But he really liked it, so that's how Nikamma happened. But tell me honestly, yeah. आपको struggle करना पड़ा कि नहीं? ये बताओ, genuinely बताओ. Struggle करना पड़ा? Was it easy to get? No, nothing is easy. I mean, there are ups and downs in everything. Even for me to shift from Auckland to Bombay, मतलब ये बहुत ही अलग लाइफ है. जो न्यूजीलैंड की मेरी ऑकलैंड की लाइफ थी वो बहुत अलग थी और जो मैं अभी मुंबई में the life that I'm living, it's very different. Although the kind of person that I am remains the same, I hope the same, but बहुत ही अलग लाइफ है. लाइफस्टाइल बहुत अलग है दोनों जगह की. और उस चीज से मुझे यहाँ आने के लिए भी बहुत struggle. I feel that was the most difficult part of my journey. And after that, yes, there have been ups and downs. You know, nothing is gonna be up all the time. I think the most important thing is how you pick yourself back up from it, and you have to be positive, and that's the only way to move ahead and forward, I feel. So what kind of downs did you see? I mean, what when you said ups and downs? Ups तो we've seen, we know. What kind of downs did you see? तो जब मैं न्यूजीलैंड से यहाँ शिफ्ट हुई थी, तो न्यूजीलैंड का जो वेदर है और यहाँ का वेदर is very different, and it's a very basic thing, but मतलब यहाँ पे रहने के लिए my body had to get accustomed to the environment that I was in. And when I had shifted, I was doing a lot of gigs. I was doing gigs left, right and center. मैं पूरे इंडिया में हम अलग-अलग cities you know travel करते थे to do shows. And as fun as that is, as exciting and you know amazing as that is, the traveling part can get exhausting. And my body wasn't used to that. I wasn't used to it. I wasn't used to singing continuously all the time. So
ये काफी सारी चीजें हुई, and then I did a gig where it didn't go as expected, and you know, we all have our good days and bad days. Some days we are great, some days we're not. It's fine, we're human. But उसके बाद मेरी जो ट्रोलिंग हुई थी on social media, oh my god, it was that was my first experience of like a swarm full of negative people and negative comments, and I don't know, it was not a good time. But I feel that the people I was with, again, my friends, my manager at that time, my parents, everybody told me that, you know, अगर आप इनको justification अभी देने जाओगे तो कुछ फायदा नहीं है उससे. You might as well keep doing your work and let your work speak for you eventually. So now it's become all okay. But yeah, उस टाइम पे बहुत ट्रोलिंग हुई थी, बहुत ज्यादा. और बताइए, पर उस वक्त जब ट्रोलिंग हुई थी, आपकी फैमिली ने आपको संभाला, उसके बाद क्या आपको ट्रोलिंग होती है कि कभी कभार नहीं होती, कि आप सिर्फ प्यार ही प्यार मिलता है? क्या सीन होता है? नहीं, होती है, अब भी होती है. पर अब ज्यादा ध्यान नहीं देते. Now it's like, and you know what, my fans really stood up for me. In fact, they still absolutely really stand up for me all the time. You know, I won't say anything to these trollers, but they'll go ahead and they'll talk to them, and they'll ask them. And sometimes, you know what, trollers don't even mean anything. They just want you to comment. Like long back, I had replied back to somebody. I can't even remember what, but I had replied back to someone, and all they said was, "Oh, ma'am, I can't believe आपने respond back किया. I'm so sorry. I did not mean this at all." You know, that's just how it is. But they don't realize that जो first comment वो लिखते हैं, which is the negative or the bad comment, whatever, we are humans at the end of the day. हमें भी feel हो सकता है उसका कुछ बुरा. But it's okay. Now I feel like I've learned to just ignore all of that, and I focus on what I can do and what I'm able to do. And if I like it, I do it. If I don't like it, I don't do it. It's like that. ठीक है जी. एक मिस गुप्ता ने मैसेज किया हिंदी में ज्यादा, हाँ भूलिए मत आप. ठीक है, हिंदी अपना. अच्छा, ये आपके फैंस के लिए. कम ऑन, लेट्स डू दिस फॉर योर फैंस. चलो फैंस के लिए फुल पावर. अच्छा, मैं आपको कुछ डंके की चोट सवाल पूछूंगा, बिंदास रिप्लाई देना है, नो डिप्लोमेटिक रिप्लाईज. आपके अनुसार, आपके दिमाग में आपका बिगेस्ट कंपेटिटर इन बॉलीवुड कौन है? ऑप्शन ए सारा, बी अनन्या. मैंने आंसर पहले ही दे दिया. कौन? मेरे ऑप्शन में से बदमाश. सारा, अनन्या या जानवी? और आंसर पहले ही दे देना, सो मैंने वही किया. ओके, सारा, अनन्या या जानवी? I said already me. Why isn't that an option? चलो ठीक है, ये है नॉटी गर्ल. तुम मैंने गूगली मार रही हो अभी. क्रिकेट में गूगली होता है, मैं समझ रहा हूँ बेटा. गूगली फेंक दिया तुमने. मेरा भाई खेलता है क्रिकेट, यू नो, सो थोड़ा बहुत सीख रही हूँ उससे मैं. अच्छा, मैं भी अच्छा बैट्समैन हूँ. ओके, हॉटेस्ट एक्टर, वरुण, टाइगर, रणबीर या रणबीर? Hottest, I think Tiger. He's very well. Honestly, I think everyone is good looking in their own ways, and they're all extremely talented. But I mean, I've not met any of them, but just by looking at Instagram and their films, I guess probably Tiger. All right. एक यूट्यूबर को जिसने आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाती या प्राजक्ता, किन के चैनल्स को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है? प्राजक्ता. भुवन क्यों नहीं? सॉरी, भुवन क्यों नहीं? मैंने सारों को ही किया, बट आपने एक चूज करने बोला, सो. Have you subscribed to all their channels? Yeah. Even Carrie and Ashish also. And Bhuvan and I, so we've met a couple of times also before. So which, okay, so but Ashish I've not.
I've not met, and I'd love to meet. I'd love to meet him. I find his videos too funny. बहुत ही funny है. Have you met Bhuvan? You have. आपने Yeah, मिला yeah, हुआ yeah. है ना? I've met Bhuvan. Yeah, yeah. Okay, so बताइए, what comes to your mind when I say Bhuvan Bam? क्या आता है आपके जहन में? Comedy king. प्राजक्ता. अरे यार ये सारे वैसे है. Comedy queen. Carrie Minati. Carrie Minati is, I would not know exactly the right word, but I think he's stood up for like a lot of YouTubers at this time with the whole, you know. मैंने actually उनका वो video देखा नहीं था, but all the challenges he went through with that, I'm sure it must have been really difficult for him to, you know, go through. But all the support he's getting, it's lovely to see. As a fellow YouTuber myself, I guess I don't do a lot of YouTube anymore, but yeah, I don't know if I still count as a YouTuber. Arey, of course, yaar, you're an actress, singer, YouTuber, everything, and PP. You're my PP. अच्छा मुझे बताओ genuinely तुमने क्या कैरी का वीडियो नहीं देखा जो उन्होंने अपफ्रंट आके देखना चाहेंगी? हाँ, ओके. देखो इसके बाद, या व्हाई नॉट, देयर इज नो हार्म इन सीइंग इट. हालांकि आई डोंट नो, एक वीडियो उतार दिया था YouTube ने, तो वो नहीं होगा, पर एक गाना है उन्होंने यलगार किया है. आई लाइक द सॉन्ग. वो देखा मैंने, वो देखा. आई सॉ दैट. मुझे अच्छा लगा यलगार बहुत. या वेरी नाइस इट वाज. Okay, all right. Favorite lady YouTuber, Lily Singh या प्राजक्ता? Lily. For sure, Lily. मैं उनसे मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत पहले से. From when I was in Auckland, तब से. I think जो मेरे फैंस हैं उन्हें पता होगा. And Lily also, she's so sweet. She, you know, we chat sometimes over Instagram and stuff. मैं उनसे मिली थी in Auckland जब वो एक बार परफॉर्म करने आई थी तब. एंड तब से, उससे भी पहले से मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ. मुझे उनके वीडियोस बहुत फनी लगते थे. एंड शी वाज वन ऑफ द इंस्पिरेशंस फॉर मी टू you know, just be myself and post whatever I want to post. In fact, I had met Lily and her mom at that time. I used to work as a part-time radio jockey in that time. Yeah. यार तभी तो मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ. मुझे लग रहा है कि यार ये मेरी जॉब ले लेंगी. अब मैं सब कुछ कर रही हूँ ना. तो no. So I used to work there, and they were one of the sponsors or something. She had come for a Diwali Mela. So that's where I had met her the first time. And yes, ever since then we've been in touch, and she's been so sweet. You know, तब से लेकर अब तक. So 100% Lily. अच्छा, 5 मैसेजेस आ चुके हैं बीच में जहां पे लोग कह रहे हैं कि शर्ली सेठिया, विल यू मैरी मी? तो आप क्या जवाब देंगी? No, I don't know. क्या जवाब कोई देगा? This is so awkward. अच्छा ठीक है. Well, thank you for the love, but yeah. Okay, so coming on to love, is Shirley Setia in a relationship? Do you have a boyfriend or something? I would like to not comment on my personal life, but I keep it that way. I think it's healthier for me. But I am in love. I think I can say that. Beautiful. I'm so happy you're in love, honestly. Really. Thank you. I truly believe, I really mean that, honestly. क्या है? I believe, जैसे I feel a lot happier in life because I have a wife, I have 2 babies. मुझे बड़ी खुशी होती है. मुझे लगता है जब लव होता है ना, आप हर चीज में आपको लव दिखाई देता है. आप गाना गाती हो, you love your music more. Yeah. You know, you read a book, you like the book more. You eat खाना, वही खाना better लगता है यार, है ना? Yeah. And I think आपका you feel better because you feel like, you know, there's more happiness around and in life. So I think that that's very important and good. What do you like about him the most?
Sorry? What do you like about them the most? नाम नहीं पूछ रहा बाबा, मैं नाम नहीं पूछ रहा, मैंने कहा That's still very personal, no? अरे ठीक है, पर हमको नाम ही नहीं मालूम तो क्या है, मैंने I mean in our head we don't know the person. अच्छा, what do you like about him the most? Everything. Superb. That, to be honest, क्योंकि मैं आपसे 1 साल बड़ा हूं, तो Oh. that but मैं एक चीज बोलूं, that is the first sign of a good relationship when you love everything about a person. So hats off, hats off. चलो उसके लिए भी एक विक्ट्री वेव कर ही दो, कौन है नाम नहीं मालूम है पर चलेगा, चलो. Superb, superb. Okay, now what I'm going to do is I'm going to give you a gift. I'm going to ask you a quiz with ABCD options. समझिए Okay. आप? और आपको सही ऑप्शन देना है. अगर आपने मेरे 4-5 सही ऑप्शंस का सही जवाब दिया, ये क्विज, ओके, इट्स अ वेरी इजी क्विज. गिव मी अ स्माइल. Okay. मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ी. हाँ, मैं तुमको एक सवाल पूछूंगा. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा. एग्जाम्पल देता हूँ. व्हाट इज विराट कोहलीज पेट नेम? ए पप्पू, लड्डू, सी चीकू, डी गप्पू. यू हैव टू टेल मी द राइट आंसर. दैट्स A B C D. डन? सिंपल. ओह माय गॉड, all this general knowledge, I'm really bad. अरे नहीं यार, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है. ओके, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. ओके, अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं आपको केनिथ कोल न्यूयॉर्क की तरफ से एक मास्क दूंगा. समझिए आप? How nice, thank you. ठीक है, that's my goal to win. चलो, let's bring it on. समझी? पूरा ये देखना. And we are in this together. समझिए आप? Yes. ऐसे. ये Full this power. can be yours. Full power. Okay? तो but I'm not going to be partial. ये तभी तुमको मिलेगा केनेथ कोल न्यूयॉर्क का जब तुम सही जवाब दोगी. ठीक है? This mask is only if you give a right answer. No cheating and no making so much pressure. And no making a cute face to make me say yes to you for everything. Okay? See, my fans are here, no? They'll help me. They're already answering my Virat answer. So बोल रहे चीकू. अरे ठीक है, वो चला. चलो. So ये रहा पहला सवाल. What was the earlier name of Lilly Singh's YouTube channel? A. Lily, B. Superwoman, C. Lilly Singh, या D. Lily Talks? Superwoman. सही जवाब. ये तो बाएं हाथ का खेल है. ये अभी भी नहीं मिलेगा तुमको. It was actually I Superwoman I. तो 1 point. Pat yourself. डबल होना चाहिए ना. Thank you. ओके, अगला सवाल. तुम्हारा को एक्टर अभिमन्यु दसानी, जिसके साथ आप फिल्म कर रही हैं निकम्मा, उनका डेब्यू फिल्म का नाम क्या था? पहले ऑप्शन सुन लो. ए निकम्मा, बी मर्द को दर्द नहीं होता, सी आंख मिछोली, या डी नौटंकी साला. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मर्द को दर्द नहीं होता. 2 पॉइंट. ये मास्क केनेथ कोल न्यूयॉर्क की तरफ से तुम्हें मिलने वाला है, बट यू हैव टू होल्ड ऑन. Oh, I was almost like अरे वाह, मिल गया. Okay. नहीं. ओके. तीसरा, शिल्पा शेट्टी भी आपके साथ निकम्मा फिल्म में है. उनकी डॉटर का नाम क्या है? समीक्षा, समीक्षा, शिल्पी या शमिता? The first one, Samisha. क्या बात है. ये तुम्हारा we are in this together. लो पकड़ लो. नहीं, एक और सवाल देता है. Don't be so greedy. Is good. Hat trick. Don't be so greedy in life. बहुत ग्रीडी हो रही हैं आप. तुम्हारे चैनल पर इस वक्त कितने YouTube सब्सक्राइबर्स हैं? 3.47, 3.4, 3.5 या 3.55? You answered every question about everybody. सबका आंसर मालूम है तुमको और खुद का नहीं मालूम. 3.4. 3.4. Yeah. See, the last I checked it was 3.3 something. I think 3.4 ही होगा.
मैं बिलीव नहीं कर सका, बाकी दुनिया भर के आंसर्स मालूम है, खुद पर नहीं मालूम है यार। चलो ऐसे करो, हाथ रखो ऐसे, ऐसे करो अच्छा, तुम। my fans are helping. It's 3.5. No, it can't be 3. Can I check? चलो चेक करो, चलो चीटिंग करो, तब तक मैं ये मास्क में चेक करो, चेक करो क्या है, गलती। खुद के बारे में नहीं मालूम क्या है यार। अरे but see, you asked me this earlier. Remember? Do you check your YouTube subscriber count? And मैंने फिर तब बोला था आपको कि मैं नहीं करती. So this is me being honest. See? क्या बात है, क्या बात है। YouTube. ओए चैंपियन, आई होप यू कहाँ रिमेम्बर योर ओन तूने- स्पेलिंग ना। Yeah. I'm trying to look for the दोस्तों 3.37. 3.37 है. 3.37 तो था ही नहीं ऑप्शन में. तुम यार, आई कांट बिलीव इट। आ जो जो एग्जामिनर है उसके सामने ही तुम बैठ के चीटिंग करके उसको जवाब दे रही हो। But What? it's 3.47 बोला था ना आपने, या 3.37 बोला था? I अरे don't कोई remember now. टेंशन नहीं यार, तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारे क्यूटनेस के लिए दे दिया तो How sweet. my team Thank will you. make sure, my team will make sure that the Kenneth Cole New York mask will reach your doorstep tomorrow. Congratulations. Thank ये लो you. पकड़ लो। Thank you. ले लो, मैं ले लो। कल पकड़ के आपको एक पिक्चर भेज दूंगी इसमें. How sweet. Thank you so much. Well done. Thank you. All Yes. right. अच्छा अब सुनो, now I want to know. ये टिकटॉक यूट्यूब जो बैटल चल रहा था, are you going to give me a diplomatic answer? Are you going to give me a तड़क answer? No answer actually, because I did not watch the video, so I don't know कि क्या battle So exactly do you have हुआ any है. preference? Do you have a preference? YouTube, TikTok, ऐसा कुछ है? No, it's not like that. I feel like I'm on all platforms, so I respect all platforms equally. I just hope that people start loving each other more, and जो trolling वगैरह है वो ही सिर्फ मैं चाहती हूँ कि कम हो. Not on any particular platform. I feel every platform has a lot of that. So I think I just wish for that. Otherwise, no. I'm happy Okay, doing I'm my going to take. छोटे मोटे work जो भी मैं कर रही हूँ, and yeah. अरे तुम मेरी टाइगरस हो यार, समझी, तुम टाइगरस हो। सुपर्ब यार, माने। अच्छा सुनो, so what again, बॉलीवुड में what comes to your mind when I say रणबीर कपूर? रणबीर कपूर, खुदा जाने. वाह। I love that रणबीर सिंह, रणबीर सिंह। song. Tatar. करण जौहर। Karan Johar is like, he's made some really good films that we've all grown up watching. So I've not met him, but I think I respect him for all the amazing films that he's put up. आलिया भट्ट। Extremely talented. कंगना I रनौत। loved her. I loved her Highway, and even Humpty Sharma Ki Dulhania. Both Varun and Alia were so cute in that film. Yeah. एंड कंगना रनौत। अच्छा लगता है ना ऐसे क्यूट एंड फिल्म्स देख के मजा आता है. सो स्वीट, क्योंकि आप ही क्यूट हो यार, ये तो है। कंगना रनौत। Queen. I loved that film of hers, and she's like super honest, so I respect that. And okay, now if I told you, अगर मैं बोलूं शर्ली सेठिया को कैसे डिफाइन करे, how would you define yourself as a person? The tiny one with not so tiny dreams. अरे Yeah. you know what? You know, मैं आपके साथ एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था, हम लोग कर रहे थे, एक इवेंट हो रहा था. Yeah. I found you very endearing यार. मुझे बहुत endearing, हाँ मुझे लगा कि बड़ी अपने जोन में है लड़की, बड़ी रिलैक्स्ड है, बड़ी चिल है, तो बहुत अच्छा है यार ये. Yeah, I'm like that. So I don't. I'm not like extremely outgoing, etc. मैं अपने में रहती हूँ, but I like when you meet me and when you speak to me, like I open up slowly. So that's just how I am. अच्छा सुनो, मुझे बता, वन रूमर जो आपने अपने बारे में सुनी जो बहुत गलत थी, वो क्या है? जो आपने कहा यार ये गलत है, क्यों फ्लोट किया, वो क्या था? पता नहीं, ऐसे तो I don't know if
I've heard anything like that. But yeah, like all the trolling that happens of me, like people ask me what autotune software do you use and stuff like that. I don't know how to. I personally don't know how to use it. Yeah, like the person who mixes the song, or you know, who knows how to work with all of that to make a song sound perfect and the way that, you know, all the songs sound these days, they must know, because that's what they do. For me, it's I just go to a mic, मैं अपना गा के I come back. That's how much I know how to edit videos, but all of that I don't know. So I guess that. अगर किसी ने आपको बोला ऑटो ट्यून के बारे में फ्यूचर में, तो मेरा नाम और नंबर दे देना. Done. Thank you. समझी? अच्छा, Shirley, I Done, have to done, talk to you about this. Our heart goes out to Sushant Singh Rajput. We're all feeling it, man. We're all feeling it, yeah. Yeah. What do you want to say sure. about that, yeah? Honestly, it has been extremely shocking. So I want to also mention this for my fans. We actually lost a very, very strong and a very core member of our of the fandom of my team, the team Shirley. Just a few days before you know, Sushant's news came, and I think all of us were very, I don't know, I don't know if we've still been completely healed from that, because Nadeem used to be a fan since, I think he was a fan of mine since like 2014 or 2015. और न्यूजीलैंड में जब मैं यू नो थी, तब से वो मेरे फैन थे. जब मैं यहाँ पे यू नो शोज करती थी, ही वाज फ्रॉम हैदराबाद, सो वो हर शो पर आते थे. इनफैक्ट एक जो कोर ओजी यू नो टीम शर्लिया, दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम ऑल अराउंड इंडिया यू नो इनिशियली मेरे शोज देखने के लिए. तो suddenly when all of us got to know that he's no more, he was also very young, I think late 20s. So हम काफी shock में I think हम सब चले गए. And even you know, to hear about Sushant, all of us have looked up to him and his work. I personally I never got the opportunity to meet him. Lekin from all the interviews that we've seen of his, from all my videos that I've seen of his with you, he just seems like such a humble. मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, आपने जब किया था छिछोरे के लिए, I think, with the entire crew. Just the way that he is was it's extremely shocking for all of us. I think it just makes you realize the importance of you know, having good people in your life and being connected with them, and you know, for us being sensitive to such topics of discussion and not discourage discussing mental health. So I'm kind of happy that, you know, now people are openly speaking about that. But yeah, it's been very difficult for all of us, especially because of Nadeem also. So yeah, I wanted to mention him. I think all of us miss him a lot. But we know as a fandom, we know as a team कि वो हमें कभी उदास देखना ही नहीं चाहेंगे, you know. And the same goes for all of Sushant's fans. I feel like, you know, he would never want us to be sad. वो खुद ही हमेशा smile, you know, he had a smile on his face. So I think it's important to acknowledge the work that they've done and the beautiful talent that you know, these people were. And my heart goes out to you and your team. And fans are not fans; they're actually family. They're family, and you treat them like family.
And Shirley, I've been in the business for a long time. Whenever you treat your fans with respect and love, nothing can stop you. Remember that, and you're on the right way. Okay. Listen, I'm going to sign off, but उससे पहले मैं आपके fans के जितने भी नाम लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उनको एक victory wave देना, ठीक है? Okay? कोशिश करते मैं सारों के नाम नहीं ले पाऊंगा. और दोस्तों, ये इंटरव्यू 1-2 दिन के अंदर YouTube पर भी आने वाला है, वहां जरूर देखिए. But to all the fans, one victory wave. Come on. Melodious Voice, Aki Patil, Just Realistics, Saroj Abhishek, STTS, Harsh Dani, all of Shirley's fans, Amang Katua, It's Op, Saurabh, Shirley Setia Love, Sminu Shah, Mukul Mehra, Rider 7766, SB Shirley, Pro Kada, Adarsh, Tandel, everyone, thank you so much for tuning in. Shirley, thank you. I want to tell you, I love talking to you from the bottom of my heart, and I'm not saying this because the interview hai. Zindagi bhar ke liye, I've got your back, yeah. I've got your back. Thank you so much. Thank you. I loved speaking with you also, and hope that we can meet soon. Whenever the situation gets better. I know, and things will be better. We all have to be positive about it. और यार 2 लाइन तो गा दो, कुछ भी गा दो, 2 लाइन गा दो, वरना लोग गाली बक देंगे कि शर्ली से गवाया नहीं. 2 लाइन गा दो, जो भी मन है गा दो हमारे लिए. अच्छा. Okay. I'll sing कोई भी नहीं for all my fans. Okay. हुआ देर से आना कर मेरी सोनिए, देर से आना कर मेरी हीरी, कि तेरे बाजू कोई भी नहीं मेरा, कि तेरे बाजू कोई भी नहीं, कि तेरे बाजू कोई भी नहीं मेरा, कि तेरे बाजू कोई भी नहीं. Thank you so much, Shirley. तुम मेरी eternal PP हो. आज से Shirley Setia को मेरी PP, Rocket PP. What a name. Thank you. Thank you so much, sir. I had an amazing time chatting with you. And you're very real, Shirley. You got to keep it real like this forever. No matter how big you become, your road is going to be very ahead. Sorry, I don't preach much, but this time I am, because somehow I feel connected to you from my heart. You're going to be destined for a lot of big things, Shirley. But you got to keep it real, and you got to remember that's all that counts at the end of the day. All right? Yeah, absolutely. Absolutely. I love you. Bye. Thank you so much. Bye. See you. और ये मास्क पहुंचा दूंगा तुमको. Don't worry, okay? हाँ, done. Thanks. Bye. Bye, everyone. Bye.